सर की बात तो बनती है इस पे Namaskar. This morning's news that the Enforcement Directorate has now decided to take possession of the properties of National Herald across the country is yet another evidence, example of the high-handedness of the government, which seeks to settle its political agendas through the Enforcement Directorate, through ED. You all know that this original complaint was filed by Subramaniam Swamy way back in 2012, and we are in 2025. The normal procedure of this government when it wants to trouble its political opponents, including chief ministers, Congress chief ministers in various states, is to have an FIR lodged, and then the ECIR, which is an enforcement directorate equivalent to a FIR, though it's an internal document. They lodge it immediately so that the enforcement directorate can go to various states and start arresting people. And you all know that, the CBI can't do that, because if the CBI wants to enter another state, it has to take the consent of that state before it enters it, or there has to be a court order. But the ED can go across to any state. So they have used the ED to destabilize governments. I remember in the case of Hemant Soren, they tried to do that, and then we got a court order. They tried to do that in the case of Sitaramaiah ji also. Unfortunately, they could not succeed. So wherever they find that they can trouble Congress chief ministers or Congress leaders through false cases, they try to do that. I remember in the case of Mr. Chidambaram, how many years ago they arrested him, and they kept on telling the court he has properties outside the country and we are sending letters derogatory, we'll get it soon. How many years have passed? You destroy a man's reputation, you destroy a party's reputation, you use your enforcement agencies for political purposes, and that's exactly what's being done in the National Herald case today. I mean, I would like to know what's the offense. National Herald was set up way back by freedom fighters who had shareholders in this newspaper. It was meant to spread the message of freedom and a message for India being together and India moving forward. It was for charitable purposes. The National Herald didn't have enough money at that time. Obviously, the Congress party had launched that paper. The Congress party gave it 90 crore rupees over the years. That debt could not be repaid. In the meantime, National Herald held assets throughout the country. So that debt could not be repaid, and therefore Young India was set up for the purposes of transferring for a sum of rupees 50 lakhs of the loan amount of 90 crores. And a Section 25 company was set up. A Section 25 company is a company where the shareholders are not entitled to any profit. The shareholders can't sell any property, they can't take any profit. So a Section 25 company was set up, and the shareholding of National Herald was taken over by the majority, but the shareholders don't own the property. The property in law can only be owned by the company.
So neither Rahul Gandhi, nor Sonia Gandhi, nor anybody else, Motilal Vora ji, of course, has passed away. He had certain amount of shares as well. They don't own the property. I mean, it's settled law that I am a shareholder of Tata's. Do I own the property? I am a shareholder in several companies. Do I own their property? I am a shareholder. The property is owned by the company. The property continues to be owned by National Herald. Right? And National Herald cannot transfer that property because this is now Young India, the shareholders. They cannot sell that property. It's a Section 25 company. And it can only be taken over by another Section 25 company. Now it's Section 8 under the new Act. Cannot be taken. And they are spreading the same message which is the original objective of National Herald. They are spreading the same message of secularism, of being together and stuff like that. So what's the offense? And why have you waited 13 years for this purpose? Why? Because you want to grab the properties. You want to paralyze the Congress party. Take possession of all the properties so that they cannot function. Because the properties are spread all over and they're over 600 crores worth of properties. That's what they allege. So they take them over, paralyze the Congress party so that they have no office to go to. As it is, the Congress party has, from what I know, not much money, so they will not be able to function as a political party. This is an assault on democracy. This is an assault on whatever we as a republic stand for. This is an unfortunate event that is reflective of the mindset of this government. It reflects the pettiness of a government that brooks no opposition, that will use agencies to destroy the opposition. They will take all those who were in the opposition, they take them in their ministries, make them Rajya Sabha members, give them posts and cabinet positions in states where people from the Congress has gone over to them, and against whom they have made public allegations of fraud and corruption. They will take those people and benefit them. There is no ED. There is no FIR there. I think the media should realize they have come after the Congress party, they have come after opposition parties. One day they'll come after you. Slowly, but surely, they will come after you. Because we are going the way of a nation that is functioning on the basis that even though we profess that we are democratic, in fact, we are just the opposite. और ये बात आपको लोगों को जान लेनी चाहिए कि ये जो ईडी का जो पोजेशन का नोटिस आया है, इसके पीछे केवल एक ही भाव है कि किसी तरीके से ये जो संपत्ति है न्यूज़पेपर की, जो जिसमें कांग्रेस दफ्तर चल रहे हैं, वो सारी संपत्ति नेशनल हेरल्ड की जो संपत्ति है वो ले लें, ताकि इस दल को पैरालाइज किया जाए, कांग्रेस पार्टी को पैरालाइज किया जाए। कांग्रेस पार्टी के पास इतना साधन तो है नहीं जितना इनके पास है कि ये 5 स्टार होटल जैसी बिल्डिंग बनाते हैं, चाहे वो असम में हो चाहे दिल्ली में हो, 7 स्टार स्ट्रक्चर बनाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। वहाँ तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन इनको तकलीफ ये है कि भाई कोई भी ऑपोजिशन इस देश में होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी मन मर्जी कहें तो हम एक लोकतंत्र देश हैं, कहने में तो हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, बट एक्चुअली आप फादर ऑफ डिक्टेटरशिप। कोई मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी यहाँ अगर तानाशाही से धक्केशाही से यही काम करने लगोगे तो फिर क्या होगा? अभी देखो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया गवर्नर के बारे। इनके गवर्नर क्या कर रहे थे? जो बिल पारित हो गए थे
असेंबलीज में उनको अपने पास रखे हुए थे, उन पे दस्तखत नहीं करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तो हर जगह इनका यही रवैया रहा है कि ऑपोजिशन स्टेट्स में सरकारें डिस्टेबलाइज करो, सरकारों चलने ना दो, जहाँ सरकारें चल रही हैं वहाँ इनके लोग खरीद लो, इनकी इलेक्टेड सरकारें गिरा दो। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं 2014 के बाद के हिंदुस्तान में हो रहा है। हमने तो पहले कभी ऐसा देखा नहीं, कोई नॉर्म्स ही नहीं है। पार्लियामेंट के चलने में भी नॉर्म्स ख़त्म हो चुके हैं, और जिस तरह जिस भाषा की ये इस्तेमाल करते हैं बाकी लोगों के लिए, और इनका केवल एक ही एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम एजेंडे के आधार पे अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं और ऑपोजिशन को ख़त्म करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो मैं उस कंपनी का मालिक, उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनता। अगर मैं किसी कंपनी का, कोई भी टाटा, अडानी की किसी कंपनी का, अंबानी की किसी कंपनी का अगर मैं शेयर होल्डर हो जाता हूँ तो मैं उस कंपनी का मालिक थोड़ी ना होता हूँ। वो तो कंपनी के जो भी संपत्ति है वो कंपनी की है, वो शेयर होल्डर की कभी नहीं होती। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कानून है, और ये इनको कानून इतना तो मालूम है। फिर भी इसके अलावा 2012 में ये इसकी शुरुआत हुई, और 2025 में आप चाहते हैं कि सारी नेशनल हेरिटेज की प्रॉपर्टीज हम कब्जा कर लें उनके, तो जो भी वहाँ से कमाई होती है वो भी नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ का मतलब ही नहीं है। सीधे तौर पर सर आप जो आरोप लगा रहे हैं, चूंकि खुद आप एडवोकेट हैं, ईडी बाय रूल फंक्शन करती है, सरकार का सीधा क्या कोशिश है पार्टी को पैरालाइज करने का, पार्टी को नेशनल हेरिटेज की जो भी संपत्ति है सब हड़प करने का, यही तो इनका एजेंडा। और एजेंडा है क्या? क्योंकि ये तो सेक्शन 25 कंपनी है जो इन्होंने बनाई यंग इंडिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बैंक के एनपीएस होते हैं ना, करोड़ों के, लाखों करोड़ों के एनपीएस हुए ना पीछे, तो बैंक, हर एक बैंक सूट नहीं फाइल कर सकता कि उनके पास मतलब कि वो इतने वक्त से वेट नहीं करते कि मुझे 15 साल के बाद वो पैसा मिलेगा। तो बैंक क्या करता है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल लोन किसी का 100 करोड़ है तो बैंक कहता है कि मैं सूट नहीं फाइल करूंगा, आप इस लोन को मुझे आप 20 करोड़ दे दो, मैं उसी से खुश हूं, आप जो मर्जी करना करो। ठीक है ना? वो कोई धांधलेबाजी नहीं होती, क्योंकि बैंक को तो नुकसान हो गया ना। उन्होंने तो 80 करोड़ माफ कर दिया, 20 में अपना लोन दे दिया किसी को कि तुम अपनी जो भी रिकवर कर सकते हो करो। लेकिन लॉस तो बैंक का 80 करोड़ का हुआ ना, तो 80 करोड़ पे कोई एफआईआर होती है? तो ये कहते हैं कि 90 करोड़ का जो लोन था कांग्रेस पार्टी पे, वो 50 लाख में खरीद लिया, तो ये एफआईआर हो गई। अरे भैया देखो, इसमें आरोपी कौन है? नेशनल हेरिटेज ने किसी ने कंप्लेन किया? किसी ने नहीं किया ना। किसी ने एफआईआर लगाई? इन लोगों ने किसी ने नहीं लगाई। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो नेशनल हेरिटेज के शेयर होल्डर नहीं है। हाँ, उनको तो नेशनल हेरिटेज कंप्लेन नहीं कर रहा, शेयर होल्डर्स ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि देश का बड़ा नुकसान हो गया, और नुकसान हो गया इसलिए उसमें फिर ईडी आ गई, उसमें फिर अपनी संपत्ति हड़प कर लो। ये किस किस्म के, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? एक सवाल जरूर अपने राज्यपाल के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया। सवाल मुर्शिदाबाद से जुड़ा है, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि वक्त संशोधन बिल हम बंगाल में लागू नहीं कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? मुर्शिदाबाद में प्रोटेस्ट हुआ। देखिए इसमें देखो मुर्शिदाबाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे तो जानकारी नहीं है, तो उसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। त्रिवेदी जी ने कहा जो मर्जी कोई कहता रहे, मुझे जानकारी नहीं है भैया। मैं तो उसी बात पे आपके सामने बात रखूंगा जिसकी मुझे जानकारी हो। Was used to generate additional proceeds of crime through bogus donation A 18 crore rupees, advance rent 35 crore rupees. What are the bogus donations? This is what agency is. What is the bogus donation? Who is given the bogus donation, and to whom? It can't be given to Young India. It has to be given to. So who owns that 18 crores? The company.
No shareholder can take any part of that money. It's a not-for-profit. No salaries are taken even, I believe. This is an absolute lawlessness in this country. They're only defaming and discrediting. Exactly, defaming and discrediting the political party and its leadership. सर आप लोग काफी समय से ईवीएम को लेकर फिर वही यार अमेरिका में भी एक नई अरे तुलसी का पाठ है सर। क्या होगा? आप इलेक्शन कमीशन से ऐसे बोलिए कि तुलसी द्वार ने कहा है, आप क्या कहते हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो भैया? थैंक यू। आपने कहा ना कि विधानसभा के बिल जो पास हैं उसको गवर्नर लागू नहीं किया, तो सुधांशु त्रिवेदी ने बोला संसद